वेलकम टू बी लर्न में आपका स्वागत है। सब्जेक्ट सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, सेशन नंबर 9। टॉपिक कवर्ड इन दिस सेशन: सिक्योरिटी एनालिसिस एंड पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, नॉन कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट, सेकेंडरी मार्केट स्ट्रक्चर, रिस्क एंड रिटर्न्स, इकोनॉमिक एंड इंडस्ट्री factors, basis for company analysis, risk elements, economic analysis, ratio analysis, and now security and portfolio management. Securities Contract Regulation Act has defined securities as inclusive of shares, scrips, stocks, bonds, debentures, stock, or any marketable security of a like nature in or any debentures of a company or body corporate, government or semi-government, etc. What is security? Security is an instrument of promissory notes or a method of borrowing or lending or a sources of contributing to the funds needed by the corporate body or non corporate body. देखिए, सिक्योरिटी की अगर हम बात करते हैं तो सिक्योरिटी क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट होता है. इट इज़ नॉट कंपल्सरी दैट इट इज़ प्रोमाइजरी नोट्स, बट इट इज़ ए काइंड ऑफ स्टेटमेंट. जैसे आप अपनी यूनिवर्सिटी का फॉर्म भरते हैं, उसमें रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन भरी जाती हैं, उसी तरह से इट इज़ ऑल्सो ए इंस्ट्रूमेंट लाइक एज योर फॉर्म्स, which include name of corporation, types of security, rate of interest, conditions to repaying of loans or borrowings, interest or type of interest, either flexible or fixed rate of interest, maturity date, and any other things that is required to the agreement between borrowers and lenders. तो ये सब चीज़ जो है उस इंस्ट्रूमेंट के अंदर इंक्लूड होती हैं. Superior returns are possible by proper security analysis through better forecasting abilities and superior expertise in security analysis. और एनालिसिस जो वर्ड है, एनालिसिस का मतलब अगर हम हिंदी में बात करें तो विश्लेषण होता है. दैट मीन्स हम जो है हर सिक्योरिटी का विश्लेषण करते हैं अंडर द सिक्योरिटी एनालिसिस. और सिक्योरिटी में आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन अबाउट द सिक्योरिटी कि बहुत सारी इंस्ट्रूमेंट इंक्लूड होते हैं जो कि फाइनेंस के इंस्ट्रूमेंट होते हैं, जिनसे हम फाइनेंस फंड रेज करते हैं और बोरो करते हैं. व्हाट इज पोर्टफोलियो? अब पोर्टफोलियो क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ सिक्योरिटीज विद डिफरेंट रिस्क रिटर्न कैरेक्टरिस्टिक्स. जैसा मैंने अभी आपको बताया कि हम सिक्योरिटी का विश्लेषण करते हैं कि किस सिक्योरिटी में कितने % रिटर्न आ रहा है. और क्योंकि हम ये जानते हैं कि मोर प्रॉफिट टेंड्स टू मोर रिस्क, किसी भी सिक्योरिटी के अंदर जितनी ज़्यादा प्रॉफिटेबिलिटी होती है उतनी ही ज़्यादा उसके ऊपर रिस्क भी होती है. तो पोर्टफोलियो के अंदर हम क्या करते हैं? कॉम्बिनेशन बनाते हैं, रैंक बनाते हैं कि नंबर 1 पोर्टफोलियो के अंदर सेम रिस्क की सिक्योरिटी को इंक्लूड कर देते हैं. इस तरह से ग्रुपिंग करना आपके पोर्टफोलियो के अंदर आता है. दैट विल कॉन्स्टिट्यूट पोर्टफोलियो ऑफ द इन्वेस्टर्स. एंड नाउ इन्वेस्टमेंट इन स्पेक्यूलेशन. अब देखिए, इन्वेस्टमेंट क्या होता है? इन्वेस्टमेंट मीन्स इफ यू want to earn a series of cash flow
और कंटिन्यू कैश फ्लो बाय स्पेंडिंग द मनी in a particular functions or activity of another organization, not only or not on your organization but another organization, that is known as investment. Most probably हम एग्जाम्पल ले सकते हैं इन्वेस्टमेंट का, बैंक डिपॉजिट्स, आइदर इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट अकाउंट, आरडी मीन्स रिक्वायरिंग डिपॉजिट अकाउंट, जो कि आपकी रिस्क जो है जीरो होती है, वो हमारा इन्वेस्टमेंट होता है. एंड स्पेकुलेशन इन्वॉल्व्स इन्वेस्टमेंट एंड वाइस वर्सा. स्पेकुलेशन हमारा इन्वेस्टमेंट ही होता है, मगर एक डिफरेंट तरह का इन्वेस्टमेंट होता है. इसमें कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अपनी अपॉर्चुनिटी को पूरा करता है. जैसे कि रॉ मटेरियल की कॉस्ट अगर कम हो जाती है तो हम ह्यूज अमाउंट ऑफ रॉ मटेरियल परचेज कर सकते हैं और उसको पूरे साल तक हम यूज कर सकते हैं, तो दैट इज स्पेकुलेशन. अनदर फॉर्म ऑफ स्पेकुलेशन इज लाइक परचेजिंग द लैंड टुडे फॉर द पर्पज ऑफ सेल आफ्टर सम पीरियड ऑफ टाइम व्हेन द कॉस्ट विल रेज. जब आपकी कॉस्ट रेज होगी तब आप उसको सेल कर देते हैं, सस्ते में आप खरीद लेते हैं, तो ये भी एक स्पेकुलेशन का एग्जाम्पल होता है. इन इन्वेस्टमेंट द ऑब्जेक्टिव्स आर लॉन्ग टर्म और मीडियम टर्म. जैसा मैंने अभी बताया कि ऑब्जेक्टिव जो है सम पीरियड ऑफ टाइम मीन्स दोनों तरह का हो सकता है, मीडियम टर्म्स भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म्स भी हो सकता है, बट स्पेकुलेशन के अंदर शॉर्ट टर्म ऑब्जेक्टिव नहीं होता. Investor takes delivery of securities and books profit when the returns are higher than his target expectation. In speculation, the perspective is short term, no intention of taking delivery, books profit from the movement of price. In Indian stock market, 80% of trade is speculation. Security analysis. Security analysis in traditional sense is analysis of the fundamental value of the shares, bonds, its forecast for the future through the calculation of its intrinsic worth. Modern security analysis relies on fundamental analysis, risk return analysis depending on variability of returns, safety of funds and projection of future returns. Forecast of share price depend upon analysis of trends of the economy, industry and SWOT analysis of the company itself. SWOT analysis means strength, weakness, opportunity and threats. उस कंपनी के ये चारों चीज़ों को हम लुक आफ्टर करते हैं. Then we have forecasting the things or price of the securities. And now characteristics of investment. इन्वेस्टमेंट की कैरेक्टरिस्टिक होती है सबसे पहले रिस्क. रिस्क मीन्स रिस्क क्या होती है? एक्चुअली रिस्क इज अ एक्सपेक्टेशन ऑफ लॉस. अगर हम इसकी मीनिंग थिंक करते हैं तो ये एक लॉस की संभावना होती है, एक लॉस की पॉसिबिलिटी को हम रिस्क कहते हैं. जो अब लॉस की पॉसिबिलिटी कैसे हो जाती है, कहाँ से होती है? जो कि फ्यूचर से होती है, और फ्यूचर हमारा क्या होता है? अनसर्टेन होता है. तो उस अनसर्टेनिटी के कारण जो पॉसिबिलिटी होती है लॉस की, वो आपकी रिस्क कहलाती है. और ये जो है डिपेंड्स ऑन द फॉलोइंग फैक्टर्स. ये निम्न फैक्टर पर डिपेंड करती है, और वो फैक्टर क्या है? लॉन्गर मैच्योरिटी पीरियड, हायर रिस्क. अगर मैच्योरिटी पीरियड लंबा होता है, बड़ा होता है, लार्ज होता है, तो ऐसे केस में आपकी रिस्क जो है ज़्यादा हो जाती है. क्रेडिट वर्थनेस ऑफ बोरोवर, मोर रिस्क्स आर लोअर. गवर्नमेंट सिक्योरिटी, और गवर्नमेंट सिक्योरिटी के अंदर आपकी रिस्क जो है कम होती है.
क्रेडिट वर्थीनेस मीन्स बोरोवर की जो पेइंग कैपेसिटी है, विलिंगनेस टू पे द रिटर्न अमाउंट ऑफ द बोरोविंग जो है उस पर भी रिस्क डिपेंड करती है। अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन रिटर्न करने में विश्वास ज़्यादा रखता है तो रिस्क आपकी कम हो जाती है, अगर कोई रिटर्न करने में भरोसा कम रखता है तो रिस्क आपकी बढ़ जाती है। नंबर थर्ड फैक्टर्स, ओनरशिप सिक्योरिटीज एज रिटर्न आर बेस्ड ऑन नेट प्रॉफिट, रेट्स आर वेरिएबल। नंबर टू, सेकेंड फैक्टर्स जो है हमारा रिस्क के अलावा रिटर्न्स होता है, और रिटर्न्स क्या है, जिसके लिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं वो हमारी रिटर्न्स होती है, दैट मीन्स प्रॉफिट। सो अ मेजर फैक्टर इन्फ्लुएंसिंग पैटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट इज इट्स रिटर्न। क्योंकि ज़्यादातर जो इन्वेस्टर्स होते हैं वो अट्रैक्ट होते हैं हायर रिटर्न इन्वेस्टमेंट में, और जैसा मैंने अभी बताया कि मोर रिटर्न टेंड्स टू मोर रिस्क, तो दैट इज यील्ड प्लस कैपिटल एप्रिसिएशन जो है वो आपकी रिटर्न होती है। और यील्ड का है क्या है, यील्ड इज इंटरेस्ट और डिविडेंड। यील्ड जो है टोटल उपज इन फॉर्म ऑफ डिविडेंड और इंटरेस्ट, केवल दो ही फॉर्म हमारी हो सकती हैं। इंटरेस्ट बोरोविंग पर दिया जाता है, जबकि डिविडेंड जो है शेयर्स पर दिया जाता है। यील्ड हैज टू बी कैलकुलेटेड ऑन द परचेज प्राइस, और यील्ड हमेशा परचेज प्राइस पर कैलकुलेट की जाती है। इसके लिए आपके दो मेथड्स हम यूज करते हैं फॉर कैलकुलेटिंग द यील्ड। पहला मेथड जनरल मेथड होता है, दूसरा मेथड जो है अप्रॉक्सीमेशन मेथड होता है फॉर कैलकुलेटिंग द यील्ड। और जनरल मेथड के अंदर हम ट्रायल एंड एरर मेथड यूज करते हैं। नेचर ऑफ टैक्स लायबिलिटी ऑल्सो इन्फ्लुएंसेज रिटर्न। टैक्स की लायबिलिटी जो है रिटर्न को इन्फ्लुएंस करती है कि अगर ज़्यादा टैक्स लगता है तो आपकी रिटर्न कम हो जाती है, अगर टैक्स रेट कम है तो रिटर्न बढ़ जाती है। इन केस ऑफ टैक्स फ्री इंस्ट्रूमेंट नेट रिटर्न वुड बी हायर। अगर टैक्स नहीं है, इन द एब्सेंस ऑफ टैक्स हॉलीडे अगर है, टैक्स हॉलीडे क्या होता है, जहाँ पर जीरो टैक्स होता है वो टैक्स हॉलीडे कहलाता है इन टर्म्स ऑफ फाइनेंस। तो टैक्स हॉलीडे के केस में आपकी जो रिटर्न है वो जो है हायर हो जाती है। नाउ सेफ्टी, थर्ड पॉइंट, सुरक्षा, सर्टेनिटी ऑफ रिटर्न ऑफ कैपिटल विदाउट लॉस ऑफ मनी और टाइम, ये इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स होती है इन्वेस्टमेंट की। कोई भी इन्वेस्टर ज़्यादातर इन्वेस्टमेंट वहाँ करना चाहेगा जहाँ उसका इन्वेस्टमेंट सुरक्षित रहे, डूबे नहीं, और रिटर्न भी सर्टेन हो, जैसे बैंक डिपॉजिट्स, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, जहाँ आपको पता है कि किसी तरह का कोई लॉस नहीं है। नंबर फोर, इफ़ द कैपिटल एसेट्स इज ईजिली रिलाइजेबल, मार्केटेबल, देन द लिक्विडिटी इज़ हायर। अगर आप जल्दी से उसे बेच सकते हैं, रिलाइज कर सकते हैं, तो ऐसे केस में रिटर्न हायर हो जाती है। इट इज़ बिकॉज कि आप रेट देखते रहेंगे, जैसे ही रेट बढ़ेगा आप सेल कर देते हैं, तो डेफिनेटली आपकी रिटर्न हाई होगी। इफ़ देयर इज टाइम गैप फॉर रियलाइजिंग प्रोसीड्स देन इट इज़ लेस लिक्विड, और अगर रियलाइज करने में काफ़ी टाइम लग जाता है तो आपको जो है रिटर्न कम मिलेगा। नंबर 5, मार्केटेबिलिटी, इजी एंड क्विक मीन्स ऑफ ट्रांसफरेबिलिटी ऑफ एन एसेट्स। देन क्लासेस, if instruments, classes of instrument, ownership, equity share, preference shares, these are known as, or classify the security as per the ownership. Equity share, इसमें जो होल्डर होता है
उसका ओनरशिप राइट होता है। समटाइम्स प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स भी ओनरशिप की कैटेगरी में आते हैं, हमेशा तो नहीं आते। डेट डिबेंचर्स, डेट के अंदर डिबेंचर्स एंड बॉन्ड होते हैं। टर्म पीरियड, इक्विटी हैज नो फिक्स पीरियड, क्योंकि इक्विटी शेयर्स का कोई टाइम पीरियड नहीं होता है। इक्विटी शेयर कंपनी की लाइफ तक चलते हैं। डिबेंचर में भी 5, 7, 12 ईयर। बैंक डिपॉजिट्स फिक्स पीरियड। नंबर 3, टाइप्स ऑफ इश्यूअर्स लाइक प्राइवेट कंपनी, प्राइवेट इन्वेस्टर, पब्लिक कंपनी, पब्लिक बैंक, पब्लिक इंस्टीट्यूशंस, और गवर्नमेंट, आइदर सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट। Non-corporate investment, besides security in corporate sector, in which household saving are to minor extent. There are other avenues. Deposits with commercial bank or cooperative bank, post office saving bank, national saving certificates, insurance, and non-corporate investment like purchase of real estate, gold, silver. Classification of the above investment: marketable real assets, gold, non-marketable bank deposits, interest payable regularly or cumulative, payment linked to event, LIC policy, provident fund, regular savings media of investment or lump sum investment. And now secondary market structure, regular stock exchange. For big companies with paid up capital 5 crores or 10 crores, then they listed into the Mumbai Stock Exchange, Calcutta, Delhi Principal Exchange, and regional exchange like Cochin, Indore, etc. And next is over the counter exchange of India, which was started on अक्टूबर 1992। जैसा कि आप जानते हैं, मार्केट की हम कैटेगरी आपको बता रहे हैं, और मार्केट की कैटेगरी में ऑर्गेनाइज्ड मार्केट एंड अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो होता है, उनकी दोनों कैटेगरीज हैं। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट के अंदर स्टॉक एक्सचेंज आते हैं, जबकि अनऑर्गेनाइज्ड मार्केट के अंदर OTCI, ओवर द काउंटर एक्सचेंज ऑफ इंडिया, आते हैं। स्टॉक एक्सचेंज के अंदर हायर कैप कंपनी लिस्टेड होती हैं, जबकि ओवर द काउंटर एक्सचेंज के अंदर मिडिल कैप एंड लोअर कैप लिस्टेड होती हैं। ऑर्गेनाइज्ड मार्केट जो है वो आपका टाइमली ओपन होता है, टाइमली बंद होता है, लेकिन ओवर द काउंटर जो है OTCI हमारा, ये 24/7 ओपन रहता है, कभी भी आप इससे ट्रेड कर सकते हैं। ये हमारा लेटेस्ट स्टॉक एक्सचेंज है। और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा कि स्टॉक एक्सचेंज जो है ये एक मार्केट है, दैट मीन्स एस्टेब्लिश्ड मार्केट है, जबकि ओवर द काउंटर एक्सचेंज एक ऐसा मार्केट है जो नेटवर्क के थ्रू चलने वाला है। एंड इसकी जो डेप्थ है वो ऑल ओवर वर्ल्ड में है। आप इंटरनेट के थ्रू कहीं से भी किसी से भी ट्रेड कर सकते हैं, ऐसा स्टॉक एक्सचेंज में नहीं होता है। Computerized trading for smaller companies with paid up capital of 30 lakhs to 25 crores. Not trading ring upper limit removed in 1997. National Stock Exchange, recognized in April 93, started operations in government, securities and money market initially. Equity trading started in November 1994. Computerized trading with countrywide network. In connected stock exchange or interconnected stock exchange, recognized by SEBI in November 1998, electronic trading of 15 regional exchanges are now players in the market. Merchant bankers, registrars, underwriters, brokers, then stock market intermediaries. Stock market intermediaries like clients broker,
jobbers and market makers, arbitrageurs doing intermarket deals where there is price difference at any point of time. जैसा कि आप जानते हैं क्लाइंट ब्रोकर जो हैं, जो केवल कमीशन के बेसिस पर कस्टमर की डील कराते हैं, वो क्लाइंट ब्रोकर्स कहलाते हैं. जॉबर्स और मार्केट मेकर्स जो मार्केट के अंदर बैठे होते हैं, जो सिक्योरिटी को परचेज करते हैं, ट्रेड करते हैं ऑन बिहाफ ऑफ देमसेल्व्स और ऑन बिहाफ ऑफ द कस्टमर. एंड थर्ड टाइप के जो होते हैं वो आर्बिट्रेजर्स होते हैं. और आर्बिट्रेजर्स का काम क्या होता है कि वो खुद अपनी सिक्योरिटी ट्रेड करते हैं. जब सिक्योरिटी सस्ती होती है उसे वो परचेज कर लेते हैं, और जैसे ही प्राइस किसी भी सिक्योरिटी के उनके जो उन्होंने जो पोर्टफोलियो बनाया हुआ होता है उसमें से किसी भी सिक्योरिटी के प्राइस बढ़ते हैं तो उसे सेल कर देते हैं, और इसी तरह से वो प्रॉफिट अर्न करते हैं या रेवेन्यू अर्न करते हैं. तो इस तरह का बिजनेस जो है आर्बिट्रेशन कहलाता है, और ये पर्सन जो है आर्बिट्रेजर्स होते हैं. नंबर 4, बादला फाइनेंसर्स who finance carry forward deals in a specified group for interest. They lend money or shares to the brokers who are in overbought or oversold position at the time of the settlement. And now risk and return. Investors have different motives for investing: regular income, dividend interest, capital gains or capital appreciation, hedge against inflation, that is positive real returns, safety of funds, that is regular returns and refined on maturity, liquidity and maturity. Security analysis involves an examination of expected returns and accompanying risk. The first three motives refers to the returns, last two are related to risk. Return depend on risk. Investors want more returns and lower risk. And now component of returns. Returns is measured by taking the income plus the price change. The term yield is also used in respect of fixed income securities. The return is to be calculated on the purchase price. The expected return may differ from realized returns, and this variations is a risk factors. Total return is calculated. Income received plus price change is known as total return. Dividend by purchase price of assets. And now measures of return. Arithmetic average. It is summation of returns over a given number of years. That is calculated by using sigma x divided by n. जैसे हम अर्थमेटिक एवरेज निकालते हैं इंडिविजुअल सीरीज के अंदर, उसी तरह से अगर आपने एक जगह सिक्योरिटी को रखा हुआ है तो वेरियस ईयर्स के रिटर्न को ऐड करेंगे और डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ ईयर्स कर देंगे तो आपका अर्थमेटिक एवरेज आ जाता है. अगर आपने बहुत सारे पोर्टफोलियो बनाए हुए हैं तो उनको भी हम अलग अलग करके निकाल सकते हैं. अलग अलग करके निकालने के बाद हम जो है कंबाइंड मीन निकाल लेते हैं बाय यूजिंग द सिक्योरिटी. सपोज आप 3 सिक्योरिटी का पोर्टफोलियो बनाया है, सिक्योरिटी नंबर एक्स, वाई एंड जेड. आप सेपरेट उनका ईयर वाइज टोटल निकालेंगे. उसके बाद सिग्मा एक्स अपॉन एन एक्स बार निकल जाएगा, सिग्मा वाई अपॉन एन वाई बार निकल जाएगा, सिग्मा जेड अपॉन एन जेड बार आ जाएगा. नंबर ऑफ सिक्योरिटी या नंबर ऑफ ईयर्स आप ले सकते हैं, N1 for X, N2 for Y, N3 for Z. Therefore, we can calculate the combined arithmetic mean by using the formula x1 into 2 into 3 bar equal to x1 bar N1 plus x2 bar N2 plus x2 bar N3 divided by N1 plus N2 plus N3. तो इस तरह से हम अर्थमेटिक मीन निकाल सकते हैं. ज्योमेट्रिक रिटर्न मेजर्स द कंपाउंड क्युमुलेटिव रिटर्न्स ओवर टाइम. The measurement of return on any security is generally done on the basis of market return, which is based on an approved index such as BSE, sensitive index 30 scripts, base year 1978 to 79 equal to
100. Risk elements. The components of risk are broadly categorized in two different parts, like systematic risk and unsystematic risk. Systematic risk, that portion of variability of return caused by common factors affecting the prices of all securities in the market, alike through economic, political, and social factors. Example of systematic risk are market risk, change in market condition or due to the change in market condition; interest rate risk, change in the interest rate by the bank policy. Number 3, inflation risk, change the price of commodity into the market. Number 4, trade cycles, business condition or monsoon for agricultural based economies like India. Then unsystematic risk, that portions affecting the variability of returns caused due to unique factors relating to the particular industry firm through such factors such as management failures, labor strikes, raw materials scarcity, substitute product, fall of demand, etc. Example of unsystematic risk are financial risk, heavy interest or inefficient capital management, management risk like inefficiency, poor planning, labor and other input risk. And now risk and uncertainty. Risk and uncertainty go together. Investor knows that there are some possible consequences, but an uncertainty outcome is not known. Some risk can be predicted and controlled by the investors and some by issuers, but there are some risks which cannot be controllable or controlled by the management as well as the issuers. What causes the risk? Like wrong decision about the investment alternatives, wrong timing of investment, nature of instrument, credit worthiness of the issuers, maturity period, length of investment, amount of investment. And now causes of risk, or what are the causes of such kind of risk, like methods of investment, secured or unsecured. हमारे ये दो तरह के इन्वेस्टमेंट होते हैं. Secured investment means if any company, any bank providing the loan to the borrower after making the security itself is known as secured investment. कि आपने लोन तो दिया लेकिन किसी सिक्योरिटी को अपने पास रखा तब दिया है, या फिर ऐसे कस्टमर को दिया है जिसको आप पहले से जानते हैं, पहले से वो लॉयल कंज्यूमर है. अनसिक्योर्ड लोन मीन्स कि बिना किसी सिक्योरिटी के हमने लोन प्रोवाइड कर दिया, जैसे पर्सनल लोन प्रोवाइड करते हैं. टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द इन्वेस्टमेंट, सर्विसिंग, रिडेम्पशन, देन नेचर ऑफ इंडस्ट्री और बिजनेस, then national and international factors. In addition to the above risk, there are other risks such as political risk, change in government policies, budgetary provisions, marketability risk involving loss of liquidity or loss of value in conversion from one assets to other assets. Sometimes the risks are because of natural calamities, accident, etc., where there may be heavy loss. Now economic analysis. Investment decision is based on availability of money and information on the economy, industry and company, current share price and expected price. Criteria for investment decision. Number 1, mood of the market, future movement of share. Number 2, past, present and expected performance of the company. Number 3, investors' perceptions about the share price, right, overvalued, undervalued. Number 4, investors' preferences, fancies and moods. Industrial or economic and industry factors. Company specific unsystematic risk can be reduced by diversifying, but systematic risk need to be studied and timing of the investment decided carefully.
Now, economic and industrial factors. Whatever is happening in the economy is likely to happen in near future need to be anticipated, or economy forecast. Survey result of the economy, gap growth rate or GDP growth rate, inflation rate, interest rate, money supply, government deficit, food stocks, expectation about monsoon, international trade, currency rate fluctuations, index of industrial production. In India, CMI, FICCI, Government Department, Industrial Association, CSO published economy date from time to time regarding the economic and industrial factors. Industry information, stalled capacity, trend of demand, competing units, capacity utilization, exports, cost of imports, substitute products, import of inputs, government policy, labor scenarios, technology changes, tax structure, inflow of new investment, etc. These are the industry information. Now, company information. Information is available in daily financial newspaper or fortnightly journals. Bombay Stock Exchange also publishes directory of companies, annual report of the companies, half yearly or unaudited results also useful for the company information. Big brokers firms also send newsletters to their clients and other investors, information on the basis of this their research. Security price information is published every day in financial newspapers, internet sites of selected finance organization. Data on mutual funds is published in financial newspapers and journals. Current schemes, news of different schemes, market price, redemption price, repurchase price, etc. And now, basis for company analysis. Stock price is generally dependent on intrinsic value to the extent of 50%. Intrinsic value is that value which is justified by the facts of assets, earning and dividends. The analyst has to project the future expected earning per share, discount them to the present time and come to intrinsic value. Another method is take expected earnings and multiply it by industry average, P upon E multiples or price equity multiples. Investment decision is to buy undervalued stock and sell overvalued stock. And now, valuation of share. Share is undervalued if its risks are lower than the market risk and returns is higher than market returns. Market price can be compared to book value or price equity ratio can be compared to similar companies in the same industry. Price depends on speculative activities like technical, manipulative and psychological. Future value factors, management, competition, prospects, change in the cost and prices. Intrinsic value factors like sales, earnings and dividends, assets, capital structures. And now, financial analysis. Financial management involves procurement and utilization of funds, cost involved for raising funds and revenues generated by using such funds. Overall capital structure of working capital needs to be studied. Capital unnecessarily blocked, underutilized or underutilized will not generate income. Financial analysis is analysis of financial statement to assess financial soundness. Financial statements are profit and loss accounts and balance sheet. Statement indicating appropriation of profit also necessary. The analysis involves following steps like comparison of statement of 3 to 5 years. Number 2, ratio analysis. Number 3, fund flow analysis. Number 4, trend analysis over 5 to 10 years.
And now, number A, comparison of financial statement. It is done by figures of this year with earlier year. Number 2, inter-firm comparison within industry. Number 3, figures of one product with other product. Number 4, comparison of budgeted with actual figures. And now, ratio analysis. Ratio is a statistical yardstick that provides a measures of relationship between any two variables. It is also known as the decision-making tools. Balance sheet ratio, current assets to current liability. It is a current ratio which is calculated by using the formula current assets upon current liability. And here the current assets are cash, bank, inventory, debtors, bills receivable, prepaid expense, accrued income. And current liability on the other hand, creditors, bills payable, outstanding expense, advance income and provisions. And now liquidity ratio on the other hand is calculated by using the formula liquid assets upon current liability, and liquid assets equal to current assets minus inventory minus prepaid expense. So these two ratios shows the short-term solvency of the firm or company, and apart from that, debt to equity ratio or debt equity ratio. Debt equity ratio shows the long-term solvency of the firm, where it is calculated as debt upon total equity, and debt to total fund or asset to equity ratio is also a tool to determining the position or long-term financial positions of the industry. And the value or ideal value of current ratio is 2:1, liquidity ratio is 1:1, debt to equity ratio is 2:1, and asset to equity ratio is 1:1. So profit and income account ratios, gross profit to net sales or gross profit margin, it is determined in the percentage, multiply by 100. Same as net profit ratio, net profit upon net sales multiply by 100, and net profit equal to gross profit minus indirect expense. So stock turnover ratio equal to COGS upon average inventory. Ratio analysis will be useful to find out financial performance, operational efficiency and profit margins of the same company, intercompany comparisons. And now another financial tools is fund flow analysis. The operations of business involves conversion of cash into different assets and then again back to cash. Statement showing sources and usage of the fund is known as fund flow statement. Changes representing sources may be issue of debentures, increase in funds, reserves and surplus, retention of earning, etc. Change in use of funds include addition to the assets, addition to the investment, decrease in liabilities by paying off loans, decrease in net worth, incurring losses. And it is calculated by using 3 steps. Step number 1, at first you have to calculate fund from operation, and fund from operation is calculated by using net profit, then general reserve, then add non-operating expense like goodwill written off, depreciation, loss on sale of fixed assets, preliminary expense written off, provisions made to the taxation, provision made to the dividend. लेस करेंगे इनकम और प्रॉफिट फ्रॉम सेल ऑफ फिक्स एसेट्स, और जो बैलेंस आपका होगा वो फंड फ्रॉम ऑपरेशन होगा. उसके बाद सेकेंड स्टेप में वी हैव प्रिपेयर द शेड्यूल ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल एंड विच इज मेकिंग बाय द कंसेप्ट ऑफ वर्किंग कैपिटल लाइक करंट एसेट्स माइनस करंट लायबिलिटी. तो उससे नेट चेंज ऑफ वर्किंग कैपिटल, आइदर इंक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल और डिक्रीज ऑफ वर्किंग कैपिटल. Then the third stage to prepare the fund flow statement. Here the left hand side shows
the sources of the fund, and right hand side shows the application or usage of such fund. तो इस तरह से हम फंड फ्लो एनालिसिस करते हैं. Then trend analysis. It is a comparison of some important ratios and rates of growth over a time period of few years. Trend of GPM, sales turnover, rate of dividends, EPS means earning per share, assets to sales growth are useful to measure operational performance. Use of any ratio without reference to other ratio may be misleading. Ratios are only preliminary steps in interpretation and must be supplemented by investigation into all other aspects of operations. Scrutiny of directors' reports, auditors' reports is also necessary in respect of contingent liabilities, unpaid taxes, doubtful debts, etc. And now fund flow and cash flow. Fund flow is used to indicate working capital. Cash flows is for only cash inflows and outflows. The usefulness of cash flow statement is to assess the cash generated, financial activities and investment activities and adequacy or otherwise of the cash. The timing of flows and whether outflows can be met by inflows reflects the ability of the company to be solvent. And now types of shares. Blue chips, emerging blue chips, industrial unit expanding and growing, generally market leaders having good market share, capacity to diversify higher sales turnover / growing profit margin, purposeful tax planning, management outlook is dynamic, commitment to research and development, quick to adapt any technologies and lower cost. And now types of shares in the market. Growth share, expanding, hence good for long term. Cyclical shares related to business cycles. Defensive shares, prices are stable, regular dividend. Discount shares, current returns are low but likely to grow in future. And now do it yourself. What is financial analysis? And question number 2, what is fund flow analysis? Explain its process. And that's it from session number 9. Thank you.